رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you are fine and doing well. स्टार्ट करते हैं आज की अच्छी बात से। सबसे पहले कुरान की एक आयत जो कि आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना माल उसरी युसरा। ट्रांसलेशन, इंडीड विद हार्डशिप विल बी ईज। एक हदीस जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान को कोई तकलीफ, फिक्र, बीमारी, मलाल, अजियत और कोई गम नहीं पहुंचता, यहाँ तक कि कांटा जो इसे चुभे, मगर अल्लाह ताला इनके सबब इनके गुनाहों को मिटा देता है। और आज के लिए जो दुआ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तेरी ज़ात पाक है, बेशक मैं कसूरवार हूँ। ये किसी भी किस्म की मुसीबत से अपने आप को बचाने के लिए या अपने आप को उस मुसीबत से निकालने के लिए बहुत ही अच्छी दुआ है। Dear students, now let's start the lecture number 3 of unit number 1, in which today we will learn about the uncertainties and indicating uncertainty in the calculation. So now first of all, let us see what does the word uncertainty or the uncertainties mean. So first of all, the quantification or the magnitude of error or the doubt in the measurement is called uncertainty. जो हमारी measurement में उसका जो magnitude of error होता है, जो chances of error होते हैं, वो basically जो है वो uncertainty कहलाता है। या हम इसको इस तरह से भी जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं that the uncertainty estimate how small or large the error is. जितना ज़्यादा हमारी uncertainty जो है वो इंक्रीज करती जाएगी, उतना ज़्यादा उस मेजरमेंट में जो है वो एरर के चांसेस बढ़ते जाएंगे। And also we can state the uncertainty as a non-negative parameter which characterizing the dispersion of the values attributed to the measured quantity. It means कि हमारे पास जो measured value है, let's suppose in this case the measured value is x. So the measured values, how much it could fluctuate between its maximum or its minimum values, that thing is named as the uncertainty. जैसे कि अगर इसकी जो uncertain value है वो fluctuate कर सकती है with the plus minus u, so as a result if the measured value is x, then the value could be in between anywhere between x minus u up till x plus u. ये तो हमारे पास uncertainty है जो कि chance of error है, जो कि quantification है, magnitude of error है और the doubt in measurement है from the measured value. लेकिन error क्या होता है? Error actually true value की subtraction from the measured value. It is a difference between the actual value and the measured value. Just like अगर हम कहें कि जो हमारे पास gravity होती है, the acceleration due to gravity, which is approximately equals to 9.8 meters per second square. So वो actual value है gravity की, लेकिन with the help of any experiment अगर हम gravity को calculate करते हैं और हमारी value जो है वो 9.76 आ जाती है, so 9.8 से 9.76 तक का जो difference होगा इन values के दरमियान वो error कहलाएगा। लेकिन हम जिस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, जिस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से उस वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं, मे बी उसमें जो वो स्मॉलेस्ट रीडिंग नोट डाउन कर सके वो 0.05 उसकी एक लिमिट है। सो
इस तरह से हमारे पास जो मेजरमेंट की अनसर्टेनिटी है, तो 0.05 जो होगा वो हमारी मेजर्ड वैल्यू में प्लस भी होगा और माइनस भी होगा, और वो हमें एक रेंज प्रोवाइड करेगा कि इस रेंज में हमारा आंसर जो है वो आ सकता है। तो ये बेसिकली यहाँ पे एक स्मॉल डिफरेंस है बिटवीन द एरर एंड द अनसर्टेनिटी. बोथ ऑफ देम आर नॉट द सेम थिंग. So since there is uncertainty to some extent in every measurement, so now how we can write down the measurement? We can write down the measurement as the best estimate plus minus the uncertainty. जो भी बेस्ट एस्टिमेट हम कैलकुलेट कर सकें किसी भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का, वो हम उसको प्लस माइनस करेंगे विद द अनसर्टेनिटी. और ये किस तरह से करेंगे इसको भी हम डिटेल में स्टडी करते हैं. यहाँ पे एक एग्जांपल जिसमें हमने इस सिलेंडर की लेंथ मेजर करनी है, और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्केल है जिसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 सेंटीमीटर है, इक्वल है. सो 0.1 सेंटीमीटर is the uncertainty which could be present in measuring the length of this cylinder. Now, how to find out the actual value? अब यहाँ पे जो हम actual value calculate कर सकते हैं, it is in between 2.7 and 2.8. It is not exactly present either at the 2.7 or 2.8. So हम यहाँ से in between इसकी value जो है वो calculate नहीं कर सकते, because in between there is no line at which we can measure the value of this cylinder. So either our answer will be 2.7 or our value could be 2.8, but actually our answer is in between these two values with the uncertainty of 0.1 centimeter. Maybe कोई स्टूडेंट अगर इसकी लेंथ को मेजर करे, मे बी वो 2.75 कंसिडर कर ले. सो उस 2.75 जो मेजर्ड वैल्यू है, जो उसने बेस्ट एस्टिमेट जो उसने कैलकुलेट किया, उस वैल्यू की अनसर्टेनिटी फिर कितनी हो जाएगी, वो 0.1 सेंटीमीटर होगी. सो इस स्केल की हेल्प से आप जो भी लेंथ मेजर करोगे उसमें मेजर्ड वैल्यू के साथ साथ जो अनसर्टेनिटी कंसिडर की जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर. इसी तरह से डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए उनके स्केल वैल्यू पे बेसिकली डिपेंड करता है. जो लीस्ट काउंट हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो स्मॉलेस्ट रीडिंग हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, वो लीस्ट काउंट कहलाती है. और उस लीस्ट काउंट को बेसिकली जो है वो उस इंस्ट्रूमेंट की अनसर्टेनिटी कहा जाता है, कि हम उससे स्मॉल वैल्यू जो है मजीद वो कैलकुलेट नहीं कर सकते. So now the types of the uncertainties, there are the two types in which we can mention the uncertainties. First of all, the absolute uncertainty, and the absolute uncertainty is denoted by the letter, the symbol delta, while the second type of the uncertainty is the relative or the percent uncertainty, and the relative or the percent uncertainty is denoted by this symbol. And the relative or the percent uncertainty does not has any unit, but the absolute uncertainty has the same unit as of the quantity. So now we will see how we can write down the absolute uncertainties and how we can write down the relative or the percent uncertainty, and how we can interconvert these uncertainty from one form to another. So first of all, for example, we have considered a value of a mass which equals to 3.3 plus minus 0.2 kilogram. So in this value, 3.3 is the actual value, it is the measured value, while plus
minus 0.2 is its uncertainty. So the absolute uncertainty will be written as delta M, which will be equals to 0.2 kilogram. And it is basically the least count of that measuring instrument with the help of which we have measured the mass of the object. Now, how we can convert the absolute uncertainty into the relative uncertainty or into the percentage uncertainty? It is quite simple. We have to divide the absolute uncertainty with the measured value and multiply this term by 100. अनसर्टेनिटी को मेजर्ड वैल्यू से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे विद द 100, so we can convert the absolute uncertainty in the relative or the percentage uncertainty, and in terms of percentage, this value, this uncertainty will come out to be 6.1%. So we can also write down the mass as 3.3 kilogram plus minus 6.1%. इसमें हमारे पास जो relative uncertainty होती है इसके units नहीं होते क्योंकि ये ratio है of the same terms. दोनों के units kilogram थे जो कि cancel out हो गए, so we will just write down in terms of the percentage. So now we will see how to convert the relative uncertainty back to the absolute uncertainty. अगर हमें इस तरह से term दी जाए और इसको absolute uncertainty में convert करना हो तो अब हम इसको किस तरह से करेंगे? हमें actually 3.3 का 6.1% calculate करना है. So in order to calculate 6.1% of the 3.3 kilogram, so what we can do, we will multiply this 3.3 by 6.1 and divide this by 100. So we will convert the percentage into the absolute uncertainty, which will again comes out to be 0.2 kilogram. So we can write down the uncertainties in either way, either in terms of the absolute uncertainty or in terms of the relative uncertainty, और हम इनको interchange भी कर सकते हैं, हम इनको convert भी कर सकते हैं from one form to another. So now, how to indicate the uncertainty in calculation? In the numeric measure of confidence in a measurement or a result is actually known as the uncertainty. And a lower uncertainty indicates the greater confidence. जितनी uncertainty कम होगी हमारी reading में उतना ही वो show करेगी कि हमने उसको accurately जो है वो measure किया है. And the uncertainties are usually expressed by using the statistical methods, which means by using the mathematical formulas. So now one by one we will see how to apply the mathematical formula while calculating the uncertainties in our result. So first of all, if the two values are going to be added or subtracted, so the rule for the sum or difference. First of all, the absolute uncertainties in case of the sum or difference are always added. अगर हम values को add कर रहे हों या उनको subtract कर रहे हों तो हमेशा absolute uncertainty जो है वो add की जाती है. This is one of the rule for indicating the uncertainty in the calculation of the addition and subtraction. So let us consider the first value, the first quantity as A plus minus delta A. In this, A is the best estimate while plus minus delta A is
uncertainty present in it, and the other value as b plus minus delta b. So इस केस में b जो है वो बेस्ट एस्टिमेट है और डेल्टा b जो है वो इस वैल्यू की अनसर्टेनिटी को शो कर रहा है. अब हमें इसको ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास क्वांटिटीज गिवन हैं इनको हम सबसे पहले एडिशन की फॉर्म में लिखेंगे, एंड देन वी हैव टू ऐड द बेस्ट एस्टिमेट with each other a plus b, and their absolute uncertainties will be added as delta a plus delta b. So the measured value z will be equals to a plus b, while the maximum possible uncertainty while adding the two values will be equals to delta a plus delta b. Second, for the difference, if we want to subtract these two quantities, then we have to subtract the measured values a minus b, while their uncertainty will be added. Uncertainties हमेशा add होती हैं, कभी भी subtract नहीं होती. So इस केस में भी हमारे पास जो मेजर्ड वैल्यू है वो a माइनस बी होगी, और इसकी जो मैक्सिमम पॉसिबल अनसर्टेनिटी हो सकती है दैट विल आल्सो इक्वल्स टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b. So this is the rule for indicating the uncertainties while adding or subtracting the physical quantities. And the rule will be remain same even if we are adding more number of terms, or even if we are adding more or even if we are subtracting more number of quantities. Second rule is for the product and for the quotient, if we multiply or if we divide the terms. So what rule we have to follow? So for that case, the fractional uncertainties are converted into the percentage uncertainties, which are then added. मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में हमें फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज, जो कि बेसिकली एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज होती हैं, उन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को कन्वर्ट करना होता है इनटू द परसेंटेज अनसर्टेनिटी, और फिर उन परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड किया जाता है either if we are multiplying the terms or even if we are dividing the terms. So first of all, for the case of the product, for the case of the multiplication, if we want to multiply the two numbers a plus minus delta a by b plus minus delta b, then first step is to convert this absolute or the fractional uncertainty into the percentage uncertainty. और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि किस तरह से हम एब्सोल्यूट या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को परसेंटेज अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो लेट्स कंसिडर डेल्टा ए. अगर हमें डेल्टा ए की परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है तो हमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को डिवाइड करना होता है मेजर्ड वैल्यू से, और इसको फिर हमें मल्टीप्लाई कर देना होता है विद 100%. So we can convert the fractional uncertainty into the percentage uncertainty. Similarly, for the delta b, we follow the same step. So now to multiply the quantity, we will multiply the product and add their percentage uncertainties instead of adding their absolute uncertainty. So a into b plus minus uncertainty, percentage uncertainty of delta a plus percentage uncertainty of delta b. So after calculating the percentage uncertainty and adding them, we have to again convert back the resultant percentage uncertainty into the fractional uncertainty. So we can write down our final result as AB plus minus delta Z, where delta Z is just the fractional uncertainty A plus delta B percentage, और इस percentage को हमने back convert करना है into the fractional uncertainty. Same rule will be followed for the quotient.
In this case, we have to divide the two terms. So again, first we have to convert the fractional uncertainties into the percentage uncertainties, and then we have to divide the ratios and we have to add the percentage uncertainties. जो ratios हैं, जो terms हैं वो divide होंगी, लेकिन uncertainty again इस case में add होगी, और final result में हमें uncertainty को जो है वो fractional form में लिखना होता है. परसेंटेज बेसिकली जो है वो यूज नहीं की जाती, फ्रैक्शनल फॉर्म में जो है वो आंसर को लिखा जाता है. एंड द लास्ट एंड द थर्ड रूल इज अबाउट द पावर. What if the quantity contains some amount of power, just like in case of the area of a square, it is L square, the square of the length. So उस केस में किस तरह से उस लेंथ में प्रेजेंट अनसर्टेनिटी को जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है? The power uncertainty is multiplied by the power. How? For example, if we considered a value a plus minus delta a, जिसकी हमें पावर लेनी है और इसकी पावर जो है वो n है, ये कोई भी वैल्यू यहाँ पे इसकी पावर हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है. So इस केस में सबसे पहले अगेन हमें convert करना है fractional uncertainty को into the percentage uncertainty as delta a %, and then we have to square the term which is a square and multiply the percentage uncertainty with the power. जो वैल्यू होती है उसका तो हम स्क्वायर ही लेंगे, लेकिन जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी उसको हम पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. उसकी वो पावर नहीं लेते, बल्कि हम उस पावर को इस अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई करके लिखते हैं. एंड अगेन टू रिप्रेजेंट द रिजल्ट वी कन्वर्ट बैक टू द फ्रैक्शनल uncertainty by converting percentage uncertainty into the absolute uncertainty. So these are some of the rules which we used to follow while indicating the uncertainty in the calculation. So now let us solve some of the examples from the book. Example 1.2, 1.3 and 1.4. So the example 1.2 is if d1 plus minus delta d1 equals to 101.41 plus minus 0.05 millimeter represents the internal diameter of the metal pipe, and the diameter d2 plus minus delta d2 represents the external diameter of the metal pipe. Then we have to find the thickness of the metal part of the pipe, including uncertainty in it. So in this case, we have a pipe which has its internal diameter and the external diameter, and we have to find out the thickness of the pipe. तो अगर हमें इंटरनल डाया नोन है और एक्सटर्नल डायामीटर नोन है, जिनकी वैल्यूज और अनसर्टेनिटीज जो हैं वो इस क्वेश्चन में मेंशन हैं, और हमें थिकनेस कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, सो हम थिकनेस को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? वी विल जस्ट सब्ट्रैक्ट द एक्सटर्नल डाया विद द इंटरनल डायमीटर ऑफ द पाइप. So in this case, to find out the thickness of the pipe, we will subtract the internal diameter from the external diameter. So the thickness, or first of all, we will just subtract the two diameters. So the D term will be equals to D2 minus D1 plus minus with the addition of their absolute uncertainties, because we have already seen that even if the values are going to be added or subtracted, their uncertainties will always add. So as a result, now we will substitute the values in the equation, which comes out to be 102.79 minus
101.41 with the plus minus 0.05 plus 0.05 uncertainty, and the units are millimeter for both the terms. So by subtracting, the D will come out to be 1.38 plus minus 0.10 millimeter. So as a result, now the difference in the radius is required to calculate the thickness. So the both diameter and the uncertainty must be divided by the 2 to calculate the thickness of this pipe. So now the thickness will be equals to the total diameter difference divided by 2, which will be equals to 1.38 divided by 2, and it comes out to be plus minus with the uncertainty, and it will be also divided by 2 millimeter. So the thickness will comes out to be 0.69 plus minus 0.05 millimeter, and this is our answer. सबसे पहले हमने इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर का जो है वो डिफरेंस कैलकुलेट किया, और उसके बाद थिकनेस को कैलकुलेट करने के लिए, इस पाइप के थिकनेस को कैलकुलेट करने के लिए हमने इसके डायमीटर का जो डिफरेंस था उसको 2 से डिवाइड कर दिया, सो दैट वी गेट आवर फाइनल रिजल्ट. और जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ एक्चुअल वैल्यू को 2 से डिवाइड नहीं किया जाएगा, बल्कि अनसर्टेनिटी की वैल्यू को भी हम 2 से डिवाइड करेंगे. So this is example 1.2. Now we will start example 1.3, which is about the area of the room, and the statement is the length and width of a rectangular room are measured to be L plus minus delta L, and the width is W plus minus delta W, and we have to calculate the area A plus minus delta A of the room and its uncertainty. In this example, now we have to calculate the area where the length and the width is given, and the area of the rectangle is equal to length multiply by width. तो अब इस केस में हमने लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करना है और हमें फाइनल आंसर में अनसर्टेनिटी को भी कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहला स्टेप जो होगा वो हमें, अब क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी नहीं बल्कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है वो यूज की जाती है. तो सबसे पहले हम लोग परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को जो है वो कैलकुलेट करेंगे. So the percentage uncertainty in the length will be equals to delta L divided by L multiplied by 100%. And if we substitute the values, it will be 0.005 divided by 3.955 multiplied by 100, and it will be equals to 0.12%. And similarly, for the width, the percentage uncertainty will be equals to delta W divided by the width into 100%. And by substituting the values, 0.005 divided by 3.050 into 100%, and it comes out to be 0.17%. So now how we will calculate the area? A plus minus delta A will be equals to length multiplied by the width plus minus delta L
percentage plus the percentage uncertainty in the width. So we will simply multiply length with the width, and I'm just going to write down its final answer after multiplying the length and the width, and it comes out to be 12.20 meter square, with plus minus the percentage uncertainty as 0.29%. 0.12 plus 0.17 is equal to 0.29%. And now we have to convert this percentage uncertainty into the fractional uncertainty. So A plus minus delta A will be equals to 12.20 plus minus 0.29 divided by 100 into 12.20. And the units will be meter square now. And this value will come out to be 12.20 plus minus 0.035 meter square. So this is how we can solve the terms when they are going to multiply. So now the next example, which is example 1.4, a ball drops from rest from unknown height, and the time it takes for the ball to hit the ground is measured to be t plus minus delta t, and the height is related to this time by the equation h is equals to half gt square, where g is the acceleration due to gravity and its value is 9.8 meters per second square, and we have to assume that the value of the g carries no uncertainty. So the only uncertainty present in the value is of the time uncertainty, and we have to calculate the height by using this formula. So now if we use the formula for calculating the height as h is equals to gt square and substituting the values of the gravity and the time, so the gravity is 9.8 meters per second square, while the time value is 1.3 plus minus 0.2 second square. So now the first step is to convert the absolute uncertainty into the percentage uncertainty. So the percentage uncertainty in the time will be equals to 0.2 divided by 1.3 multiplied by 100%. And it comes out to be 15.4%. So the height h will be equals to, we will multiply and divide the rest of the terms, and the answer is 8.30 meter, with the plus minus multiply the square term, which is 2, by 15.4% to get the uncertainty in the answer. So this come out to be 8.30 meter plus minus 30.8%. And again, we have to convert back to the fractional uncertainty. So 8.30 plus minus 30.8 divided by 100 multiplied by 3.80, and this answer will come out to be 8.30 plus minus 2.6 meter. So this is how we will find the uncertainty in case of the power. Dear students, kindly note down your today's homework. For today, you have to solve the assignment number 1.2, 1.3, and 1.4 from your book.
Dear students, kindly note down the today's homework so that you can solve it later on in your physics files. And your homework for today is assignment number 1.2, 1.3, and 1.4 from your book. This is the end of today's lecture. I hope all of you have enjoyed today's lecture. Thank you so much. For any kind of queries, you can write your question in the comment section. See you in the next video with a new topic. Till then, take care and Allah Hafiz.